Welcome back. Let's start from the clip which we discussed in the last session. You're going to witness a small group conflict, or a small group conflict may, very interestingly, participants would start from a different story and would end at a different story. और आप देखिएगा कि किस तरह से थॉट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अकर करती है. No question, this is an open and shut case. Totally. Let's wrap it up and get out of here. If you're all ready with your ballots, hand them in. Thank you. Okay, we have guilty, 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 not sure. Come on. Not sure? Give me a break. What? I'm not sure. I have a right to be not sure, don't I? The rest of us heard the same testimony, and we all voted guilty. Come on, I've got an important meeting with a client. I'm just not convinced. The defendant, Mr. White, maybe it was an accident like he says, or maybe he was provoked into punching the plaintiff. Maybe. Look, he broke the other guy's nose. I say we award the plaintiff his $1 million and get it over with. This is a clear case of battery. Well, not that clear, actually. The evidence sort of points to guilty, but I was wondering about that accident part myself. When I was listening to Mr. White on the stand, he didn't really seem like the type who would go around punching people for no reason. Did you have trouble with that? Me? I don't know, maybe. The only trouble she had was staying awake during the testimony. Would you mind reading back that part about the actual encounter? The defendant claims, from the attending doctor at the hospital, there, like I said, open and shut. Can we get this over with? That last part, do you mind? I told Mr. Garrison he had to do something about his mangy dog or I'd call the police. Then he came toward me and says he tripped on the rug. But to my mind, he was lunging at me, so I put up my hand to protect myself, and well, somehow his nose got broken. Somehow? Sure. Noses just don't get broken. Exactly. I don't know. Broke a few noses in the Navy. As a boxer. Oh, brother. Come here. Want a demonstration how easy it is? Give me a break, huh? Could we dispense with the macho stuff, please? The cartilage in the nose happens to be extremely breakable. It's a medical fact. Ship's medic had his hands full of noses. That's a funny image. Could we get serious? I am serious. If Garrison tripped and fell into anything, the defendant's hand, the coffee table, the floor, just the impact, he's a pretty hefty guy, could easily snap his nose. Sounds right. What do you think, pal? Well, yeah, I was confused, but now White's testimony is starting to add up. I watch a lot of sports, football, amateur boxing, like the Olympics. You see nose guards all the time. Look, Mr. White had the motive to punch him. He was there at the guy's house complaining about Garrison's dog. He called it a mangy mongrel, and this had been going on for years, driving him nuts. He even tried to poison the mutt, for God's sakes. That was an unfounded allegation. Where's the vet bill? Where's his witness? If the dog was that sick, why didn't Garrison show some shred of proof? I guess he should have. And this certainly wasn't a mutt. This is a purebred Irish Terrier, and they're a very sensitive and rare breed. Poison would have killed it. I'm a dog person. I like cats. So what do we know? The barking was keeping him up nights. I can understand that.
Dogs, car alarms, noisy neighbors. Of course, I don't live in a fancy neighborhood like these guys, but who wouldn't complain? But that doesn't mean you lose control and just haul The off. evidence, the testimony, the doctor's reports, the photographs, all the elements of proof have been clearly met. Clearly? Not for me, they haven't. My instincts tell me that Mr. White... Instincts. We're supposed to be dealing with facts here, not instincts. Take it easy, mister. A little respect, if you don't mind. Well, we're not supposed to be psychologists here. We're not executioners either. That's pretty dramatic. The plaintiff is suing for $1 million. That is pretty dramatic. White would probably have to sell his house to come up with even half that kind of money. It's like the financial life sentence. You know, he's probably insured. We're getting off the point. Why do I have to keep reminding everybody to decide this based on evidence? The consequences to people's lives is not our problem. Well, I don't agree with that. Let's go over it all one more time. From the attending doctor at the hospital, quote, "The injury sustained was caused by a blow, possibly a fist to the nose." Possibly a fist. Not necessarily. If White thought the guy was coming at him and put up his hand to protect himself, and he connected with the guy's nose, well, I believe that's exactly what happened, and nobody can prove otherwise. Do you believe this? Look, maybe he has a point. All I know is that it's getting late. Well, let's have another vote. I was just going to say that. This is absurd. Why? Because it's not turning out the way you two wanted? Look, I don't care how this turns out. All I know is that it's getting late. Forget the ballots. Not guilty. Not guilty. Definitely not guilty. Never thought he was. I'm convinced. Not guilty. Sure, okay, whatever. I don't like this, but not guilty. Let's get this over with. Thank So have you seen how interestingly they started from guilty, 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 and guilty, and they ended up not guilty, not guilty, and not guilty. So many a times हमारी डिसीजन मेकिंग इसी तरह ही हो रही होती है. Many a times हम रैशनैलिटी को नहीं देखते, हम इमोशन से फैसला कर रहे होते हैं. Many a times हमें जल्दी में होते हैं और हमें सिर्फ मीटिंग में पहुंचना होता है, इसलिए हम फैसला कर रहे होते हैं. Many a times हमारे और बहुत से पर्सनल इश्यूज, पर्सनल बायसेस वो हो सकती हैं जो कि हमारे फैसले को डिस्टॉर्ट वो कर रही हों. तो we have to be careful. It's not just deciding that 2 + 2 = 4. Sometimes आपका छोटा सा किया हुआ फैसला वो किसी की बहुत बड़ी जिंदगी की प्रॉब्लम वो बन सकता है. तो we have to be careful, we have to be rational, we have to be logical, and obviously sometimes we have to use our instincts. So forewarned is forearmed. आपका author लिखता है कि try to uncover errors in thinking before they become errors in judgment. Okay, this is very important expression. And then your author is talking about that when you trust your gut. अब आपको ये देखना है कि आपको अपनी इंस्टिंक्ट पे ट्रस्ट कब करना है, अपनी गट फीलिंग्स को आपने ब्रूए कार कब लाना है. Your author says कि emotions and feelings might not only be important in our initiative ability to make good decision, but may actually be essential. Okay, तो अब emotions and feelings को हम खत्म नहीं कर रहे हैं, वो हमें गाइड करती हैं, वो हमें सिग्नल्स देती हैं कि हमारा फैसला सही है कि सही नहीं है. तो intuitional aspects are always counted. Professional judgment can often be reduced to patterns and rules, and various traits of human nature can easily cloud our intuitive decision making. So these are the important highlighted points which I have picked for you when your author is talking about when to trust your gut. Your author says कि जब हम intuitive insight के ऊपर focus कर रहे हैं, तो our emotions and feelings might not only be important in our intuitive ability to make good decisions, but may actually be essential. और उस मकसद के लिए आपका ऑथर लिखता है कि to describe that vague feeling of knowing something without knowing exactly how or why, they used words like professional judgment, intuition, gut instinct, inner voice, or hunch, but they couldn't describe the process much beyond that. So obviously intuition, sixth sense, gut feeling, हम कहते ही ऐसे एस्पेक्ट तो हैं जिसकी हमारे पास कोई लॉजिकल क्यू, लॉजिकल रैशनैलिटी, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वो नहीं होती. So अब
ये बड़ा ट्रिक पॉइंट है हमारे लिए कि हम इंट्यूटिव जजमेंट को रैशनल जजमेंट के साथ एसोसिएट करके किसको कब ज्यादा प्रीडोमिनेंट इंपॉर्टेंस दें। तो उसका जो जवाब हमें मैनेजमेंट साइंसेस से मिलता है वो ये है कि जब आपकी एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो तो रिलाई मोर ऑन इंट्यूशन, और जब आपकी एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रिलाई लेस ऑन योर इंट्यूशन। सो दिस इज द लाइक अ जर्नल method, journal process we can use to distinguish and differentiate the priority between intuition and logic. So what is actually your gut? जिसको हम इंट्यूशनल एस्पेक्ट्स के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि माइंड कॉन्शियसली प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन दैट वी आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ। तो बहुत सी ऐसी चीजें अननोन्स हमारे माइंड के अंदर वो प्रोसेसिंग में होते हैं जिनके बारे में खुद भी हमें शायद पता नहीं होता। बहुत सी ऐसी थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं जो हमें बैठे बैठे आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत से ऐसे ख्यालात होते हैं जिनका ओरिजिन हमें पता नहीं होता। सो कई जगहों पर आप जाते हो, आपको लगता है कि आप पहले भी शायद कभी यहाँ पर आए थे। बहुत से चीजों के बारे में आप जब डीप सोचना शुरू कर देते हो तो वो चीजें होना शुरू कर देती हैं। बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के अंदर जिसके साथ एसोसिएटेड हमारे पास कॉमन टर्म्स के अंदर कोई एक्सप्लेनेशन शायद ना हो। सो द सेंस ऑफ रेवलेशन एट द obvious occur when your conscious mind finally learns something that your subconscious mind had already known. और हम अक्सर औकात अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की नोइंग को वो जानते नहीं हैं। सो चीजें हमारे ऊपर आश्कार अक्सर औकात वो होनी शुरू हो जाती हैं। सो आपके गट के बारे में आपका ऑथर लिखता है कि ब्रेन इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू अदर पार्ट्स आवर बॉडी through an extensive nervous system as well as through chemical signals, जिसमें कि हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, हमारे मॉड्यूलेटर्स हैं, जिस तरह एड्रेनलिन सिक्रीशंस हैं ब्लड के अंदर। जब वो आती हैं तो आप एकदम से हाइपर सेंसिटिव हो जाते हो, आप एंजाइटी आपके अंदर डेवलप कर जाती है। तो इस तरह बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन चेंजेस के साथ, जिन एस्पेक्ट्स के साथ ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है वो एसोसिएटेड है। सो सम न्यूरोसाइंटिस्ट्स assert that what we call the mind is really this intertwined system of brain and body। ठीक है, और उन दोनों के मिक्सचर से बहुत सारी जो एक प्रोसेसेस जनरेट होते हैं, जो फीलिंग्स जनरेट होती हैं, ये सब चीजें प्रिवेल करती हैं, इफेक्ट करती हैं हमारे डिसीजन मेकिंग को। खिर्द और जुनू जैसे दो और एक्सप्रेशन मेरे जहन में आ रहे हैं कि खिर्द और जुनू की जो कैफियत हैं वो भी बेसिकली एसोसिएट करती हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के साथ, हमारे पैशन के साथ, हमारे इरादों के साथ, हमारे किरदार गुफ्तार के साथ, हमारे कंडक्ट के साथ, हमारी इंटरडिपेंडेंसीज के साथ। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि जिनको हमें सोचना, परखना, देखना और जानना होगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग इमोशनल, यहाँ पर अब आपका ऑथर एक और आर्टिकल का रेफरेंस हमें दे रहा है और वो कहता है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग इमोशनल, उसके बारे में रिमेंबर कि डिसीजन मेकिंग इज फार फ्रॉम अ कोल्ड एनालिटिकल प्रोसेस। ओके, बिकॉज डिसीजन मेकिंग के नतीजे के तौर पर वो सिर्फ एक फीलिंग नहीं होगी, आउटकम होगा। सो अवर इमोशंस एंड फीलिंग्स प्ले अ crucial role by helping us filter various possibilities quickly, and our intuitive thinkings and feelings thus guide our decision making to the point at which our conscious mind is able to make good choices. So आप इंट्यूशन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इवन दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन, कि आप अपनी गट फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज समटाइम्स वो आपको ऐसे सिग्नल दे रहे होते हैं कि जिसके बारे में आपके पास कोई रीजन और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो नहीं होती, बट स्टिल दैट इज अ सिग्नल व्हिच इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज डिजायरेबल बाय यू। सो इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग इमोशनल के अंदर आपका ऑथर लिखता है कि बैलेंस्ड इमोशंस आर क्रूशियल टू इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, और बैलेंस्ड इमोशंस तभी आएंगे व्हेन यू आर एबल टू डू इमोशनल लेबर। इमोशनल लेबर तभी होगी व्हेन यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, और आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी तभी होवोगे व्हेन यू आर सेल्फ अवेयर, व्हेन यू आर सेल्फ कंट्रोल्ड, व्हेन यू हैव एम्पैथी, व्हेन यू आर मोटिवेटेड, एंड व्हेन यू आर देयर टू कम अप विद सोशल इंटेलिजेंस। सो यहां पर अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे एक्सप्रेशन मिला जिसके ऊपर हम बात शुरू कर रहे हैं, एंड दैट इज अ पैटर्न इन पैटर्न्स। और ये बेसिकली नॉलेज मैनेजमेंट की भी बुनियाद है कि नॉलेज उस वक्त क्रिएट होता है जब आप पैटर्न्स को अंडरस्टैंड वो करना शुरू कर दो, और पैटर्न्स इन पैटर्न्स को आप अंडरस्टैंड वो करना शुरू कर दो। सो अ पैटर्न इन पैटर्न्स के हेडिंग के अंदर आपका ऑथर लिखता है कि एक्सपीरियंस enables people to chunk information so that they can sort and retrieve it easily।
और एक्सपीरियंस का याद रखिएगा कि कोई सब्स्टिट्यूट वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो हम एक जो टिपिकल मुहावरा सुनते हैं उर्दू में कि जो हमारे बड़े हैं उन्होंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए, दैट इज एक्चुअली ट्रू। उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है, दैट इज बेसिकली देयर टू कम अप विद certain rationalities. So experts see patterns that elicit from memory the things they know about such situations, and professional judgment can often be reduced to patterns and rules. इसके अलावा याद रखिएगा कि जब हम इन पैटर्न्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो इंट्यूशन एंड जजमेंट आर सिंपली एनालिसिस फ्रोजन इनटू हैबिट, और हमारी जैसी हैबिट्स होती हैं वही चीज हमारी डिसीजन मेकिंग के अंदर डेमोन्स्ट्रेट वो हो रही होगी। सो वी आर रीचिंग कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ थिंग्स दैट गो ऑन इन आवर परसेप्चुअल सिस्टम, और जो चीज हमारी परसेप्शन में नहीं है हम उसको देख भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते, मान भी नहीं सकते। दैट इज द रीजन कि अक्सर औकात में एक स्टेटमेंट डिस्कस करता हूं कि आईज कैन नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो। सो व्हाट डिस्टिंग्विशेस एक्सपर्ट्स इज दैट दे हैव वेरी गुड encyclopedias that are indexed and pattern recognition in that index, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि उनका कौन सा जज्बा, कौन सा इमोशन, कौन सी फीलिंग कहां से ट्रिगर हो रही है, और वो चीज किस किस्म की बायसनेस, किस किस्म का रिएक्शन क्रिएट वो कर सकती है। So what we have to do, we have to learn the art of going for cross indexing. और क्रॉस इंडेक्सिंग के लिए your author says कि in general management people with varied and diverse backgrounds are, all other things being equal, going to probably be more valuable and will learn faster because they will recognize more patterns. तो हम अपने इर्द गिर्द, हम अपने गिरदोनवा में, हम अपने हालात और वाकयात में जो बढ़ते हुए तकाजे, पैमाने और एस्पेक्ट्स हैं, चेंज होते हुए जो एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हम ये जान सकें कि व्हाट्स गोइंग ऑन, not what you are perceiving, not what the media is telling you, not what your friend has told you, but what reality is, what actually is going on, what is that unforeseen, what is that which is carrying risk. तो बहुत कुछ ऐसा है कि अगर हम देखना शुरू करें तो एक नुक्ता भी शायद अपनी एक्सप्लेनेशन में वो बहुत ज्यादा डिटेल वो ले जाए। ओके, वो एक सूफी जो एक कोटेशन है कि एक नुक्ते विच गल मुक्ति है। तो अगर आप तशरीह करने बैठो, अगर आप समझने बैठो, अगर आप एनालाइज करने बैठो, तो शायद एक नुक्ता भी आपके लिए बहुत बड़ा हो, और अदरवाइज एक जंगल भी शायद आपके लिए कोई मायने वो ना रखता हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोटेशन और एक वाकया मेरे जहन में आ रहा है फ्रॉम हेलन केलर। आपको पता होगा कि हेलन केलर इज अ लेडी हु वाज अनएबल टू सी, हियर और स्पीक फ्रॉम द वेरी अर्ली चाइल्डहुड। उसकी एक कोटेशन है बड़ी इंटरेस्टिंग। अब याद रखिएगा कि हेलन केलर का हम जिक्र कर रहे हैं कि शी वाज अनएबल टू सी, हियर एंड स्पीक सिंस चाइल्डहुड। ओके, हुआ ये कि एक मर्तबा उसकी एक फ्रेंड जंगल की सैर पर गई और एक हफ्ते की कैंपिंग करके वापस आई। हेलन ने उसको पूछा इशारों की जुबान में कि व्हाट हैव यू सीन देयर, तो उसकी फ्रेंड ने जवाब दिया नथिंग स्पेशल। तो हेलन वाज शॉक्ड। हेलन कहती है कि you have been to jungle for a week and you haven't seen anything special. I touched the petal of a flower and can write the whole novel. अब किसी के लिए एक पत्ती के एहसास में एक पूरी दास्तान रकम है और किसी के लिए पूरे जंगल में नथिंग स्पेशल है। तो यहां पर हेलन केलर ने एक बड़ा हिस्टोरिकल जुमला बोला। वो कहती है कि ब्लाइंड आर नॉट दोज हु कैन नॉट सी, Blinds are those who do not have a vision. तो अंधा वो नहीं है जो देख नहीं सकता, अंधा वो है जिसके पास बसारत नहीं है। जो सुन नहीं सकता वो बहरा नहीं है, जिसके पास समात नहीं है वो बहरा है। तो इन अल्फाज के फर्क को हमें समझना पड़ेगा। हेयरिंग और लिसनिंग के डिफरेंस को वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारे इर्द गिर्द जो पैटर्न्स हैं, हर एक में निशानियां हैं उनके लिए जो अकल रखते हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल। सो क्रॉस इंडेक्सिंग में आपका ऑथर लिखता है कि गट इंस्टिंक्ट्स आर द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस, मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ देम। वी जस्ट नीड टू ओपन आवर आई एंड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एविडेंस, एंड दैट सम टोटल enables you to make reasonable decisions.
तो उन तमाम एस्पेक्ट्स में जो कुछ भी हमारे गिरदोनमा में है, जो कुछ भी हमारे ताल्लुकात और मामलात और एहसासात में है, वो सब कुछ शहादत रखता है बहुत कुछ ऐसे की कि जिसको शायद हम जनरली परसीव करना ना चाहते हैं, ना कर सकते हैं, ना कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करते रहना वो शर्त है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें आश्कार वो होना शुरू हो जाती हैं, आपकी तवज्जो की मरहूने मिन्नत होती हैं। Therefore, your author is talking about know and check thyself. इस खूबसूरत एक्सप्रेशन के साथ आपका ऑथर क्या डिस्कस करता है, उसके हवाले से पहले हम एक छोटा सा क्लिप देख रहे हैं। Good afternoon. Let me take you into the laboratory and show you something amazing about how to activate the human brain to help it find solutions to challenges. A research participant is escorted into a room, and there we test the person's mood and problem-solving abilities using standard measures. Next, we present them with a news article to read. And much like the news that you see and read every single day, it only focuses on the problem. So there's an example. Hunger in America, and how a new report found that many US cities are grappling with rising food insecurities and homelessness. So this article presents one statistic after another about this problem. Next, the person is tested again on mood and creative problem-solving ability. So that's the control group. Now on to the experimental group. The only difference in the design is the news article. It goes on to present actual or potential solutions to the problem. So in the case of Hunger in America, there are 5 solutions, 5 actions you can take right now in your community to help solve hunger, like donating to a local food bank or fundraising. And again, we test their mood and creative problem-solving abilities. In this study that I conducted with Ariana Huffington and researcher Sean Acor, after we ran 250 people through this, we were shocked by the difference between the two groups in both how they felt and their creative problem-solving abilities. When you present someone with problems that they can solve and solutions that they can actually take themselves right now, their creative problem-solving abilities on unrelated subsequent tasks increased by, on average, as much as 20%. So what that shows us is that we remind the brain that in one domain there's a path forward. You can actually import that empowered mindset to another domain. They also reported feeling better, 19% less agitated, 23% less uptight. So what that tells us is that for managers who are trying to lead their teams through tough times, you actually can talk about the negative in a way that maintains engagement and a solutions-focused response to problems. Common wisdom suggests that in order to create great change, we need to focus on all that's broken and fix it. But we're seeing that that's actually about to change when it comes to our companies and the media. See, research from the fields of positive psychology and neuroscience are providing us with a compelling case that shows us there's a more productive path, and it's twofold. It's highlighting current progress and also focusing on solutions that you can take in response to problems. It's getting the brain to focus on successes and solutions. In the midst of problems, you're not spending time complaining, but you're actually focusing on what you can do about it. The thing is, though, right now on the news, that is not what's happening. It's something that I know all too well. So I was originally a computer engineer writing code at this .com that I worked for, dreaming about being a network news anchor broadcasting from New York City. And I sent 150 tapes around the country to land that first job. Guys, guess how many calls I got? One. And I was so grateful. Bienvenidos a El Paso. I packed my bags for Texas. I was so thrilled to be there. Now, the exciting part of the story, though, is what would normally take someone about a decade to go from Chicago, or well, I was in El Paso to Chicago to New York. I was able to actually make that jump in 3 years. I credit my meteoric rise to hard-hitting investigative pieces. I know you all saw them. Bed bugs take over mattresses across Chicagoland. Skin-eating fish, ladies, make for a better pedicure, right? And my biting interview with the Dalai Lama. Oh, wait, actually, I should say it was Dolly the Llama. Ah. There we go. There she is. No, but I tell you about this timeline because when I made it here to CBS News in New York, I was still full of hope and optimism about the good work that we could do using our reach and resources, right?
Except that my 2 national news programs were full of negative stories. I knew that there was a better way that we could cover the news, a way that actually empowered people and helped move them forward in a positive direction. And that's what led me to study positive psychology under Dr. Martin Seligman at the University of Pennsylvania. And so this is what I came to see, but more importantly, what we can do about it. The media's obsession with all that's broken is holding back collective progress, and it's negatively affecting our health and happiness. In a previous study that I also did with Arianna Huffington and Sean Acor, we found that just 3 minutes of negative news in the morning can lead to a 27% higher likelihood of you reporting your day as unhappy 6 to 8 hours later. What that means is that negative mood and mindset sticks with us through our time at work and our time with our families. Now, I know some people say, well, you know what? News, it's not going to change because negativity and sensationalism sell. But actually what we're seeing is that there is a different viewpoint that's coming out of the research. So I know that here at Google, and there are many organizations like it, where your bread and butter is advertising, right? A compelling body of research from the fields of advertising research and others are finding that negative content negatively impacts key advertising measures, like likelihood to purchase or feelings towards a brand of the product advertised alongside it. So of course, if I just saw in the news that the apocalypse is coming, I'm not going to buy a new unarmored Lincoln from Matthew McConaughey, right? Meanwhile, when you place positive content alongside an advertisement, that actually increases those key measures. So people feel better about the product that they're watching the advertisement about. There was a study done just down the road here at Stanford University, published in the Journal of Advertising, that found that if you expose someone to positive content ahead of an advertisement, they feel 24% more likely to purchase that product than had they been exposed to negative content. Why did I become interested in this in the first place? Well, because news organizations are largely dependent on advertising revenue, right? So this is incentive to create more of the kind of content that can fuel advertising effectiveness. So that's my economic argument to news executives. But really, to me, this is just a means to an end. And the end is that we change the narrative on the news that actually fuels collective progress instead of holding us all back. You see, a barrage of negative news stories feeds us this lie that behavior doesn't matter. Think about it. Problem, 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 no discussion of solutions. There are millions of things in this world beyond our control. The problem is when our brain starts to believe that all things are beyond our control. And that impacts how we approach our work and our time with our families. Think about it. At work, this can happen too. If our company culture is overrun with negativity, finger pointing, gossip, and other things that we have to deal with. If you're launching a new product, and through that whole process, we're focused so much on the stresses and to-dos that we forget about the pre-orders coming in or the investment that's been secured, we can literally decimate employee engagement and shareholder confidence. And so, the more that we can reorient our brain towards the fueling parts of our reality by what we talk about, by the way we communicate with the people around us, research shows that actually fuels performance because it puts the brain in a positive state. And that, in turn, has been connected to many performance measures. Just some examples. Research shows that optimistic, empowered sales professionals outsell their pessimistic counterparts by 37%. A follow-up study found that it was by as much as 56%. This was done at MetLife by the University of Pennsylvania. Optimistic sales professionals, they have stuff to complain about, right? Right? Yeah, except they're more focused on making the money, hitting their goals. They don't have time to waste on complaining. Meanwhile, managers who get their team to start focusing on all that they're doing right have been able to improve the entire team's productivity by 31% in just 3 weeks. The more that we focus on the positive, on the fueling parts of our reality and the solutions when we're facing problems, the more we fuel the human brain. So now in my work with companies around the globe, I help individuals and business teams make the habit of doing all this easier. So we've seen incredible results in our work with Nationwide Brokerage Services, a wholly owned subsidiary of Nationwide Insurance. They instituted something called the morning cuddle, or actually I should say, sorry, it's the morning huddle.
I'm sure they'd love a cuddle too, but it's actually called the huddle. I'm not there for the morning, but so the morning huddle is something where they get their sales professionals off the phones, which is how they make their sales, right? And they get them to meet first thing in the morning to talk about two things. They talk about successes from the past 24 to 48 hours that they might not have heard about. And then they also give a chance for anyone who needs a little extra support that day to speak up so their colleagues can rally around them and offer help. Well, guess what? The results have been remarkable. Sales skyrocketed. The new insurance application rate increased by 237%. Revenues have gone up by 50% in an 18-month period. Not a small 50, this is hundreds of millions of dollars. I worked with a school district in Washington State called Sunnyside School District, or high school, and they were facing an abysmal graduation rate, 41%. So the socioeconomically depressed area was dealing with many problems and failing on many fronts. Instead of complaining about it, they took this two-pronged approach. They decided to celebrate even the tiniest successes from schools and from their teachers and students. And then they stopped complaining and focused on all the actions they could take to raise scores and improve grades. Well, they were able to raise their graduation rate up from 41% to 92% in 8 years, and they're not done yet. So if we want to change work, we have to talk about what's working. If we want to solve our biggest challenges, we've got to talk about what's to come. So when we get caught in our businesses and organizations in this negative vortex, we can use the same solutions-focused formula to get better results. In the meantime, the news media as a whole needs to make a great shift away from talking about all that's broken to start talking about what's working and what's to come. And so journalists, leaders, parents, and all the other people who choose on a regular basis to focus on the positive, you are the true leaders as we move forward into the future. And so my hope is that we can focus on all the successes and solutions in a way that reminds our brain that our behavior matters and that we can make a difference in the face of challenges to create the results that we're looking for. So we have to be careful that what's working and what's to come. And you can comfortably witness that how this lady is telling us that what are the aspects associated with decision making and how different organizations were able to make so much increase in their outcomes and the percentage increases. So remember that know and check thyself. It is said that we will often take unnecessary risks to recover a loss. The classical gambler's syndrome, which people sometimes suffer from. And we have the tendency to see patterns where none exist. What statisticians call overfitting the data. So ये तमाम वो problems हैं जो जिनका शिकार हम generally unconsciously वो हो जाते हैं. और remember another thing, very important quote, that numbers cannot tell you the whole truth. तो अक्सर औकात आपको analyze करना पड़ेगा चीजों को beyond the numbers as well. So don't fall in love with your decisions. Everything's fluid. You have to constantly, subtly make and adjust your decisions. Okay? और ये ऐन मुमकिन है कि आपका किया हुआ फैसला वो गलत हो. यहाँ पर हमारी डिस्कशन चैप्टर स्लाइड्स और कंटेंट्स के हवाले से वो खत्म होती है. अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो I still have got 5 minutes to conclude the session. So you can raise your hand and please start your discussion. I have allowed you to turn on your microphones. So anyone, anything which is tickling in your mind, you can turn on your microphones and discuss. I'm requesting again, if there is any question or query in your mind based upon all the information that we have collected today, if there is any question, you can turn on your microphone and ask. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम फवाद. सर मुझे थोड़ा सा एंड में जो ओवरलिफ्टिंग डाटा था इसका थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, इसकी कोई एग्जांपल दे सकेंगे सर? बेसिकली आपकी जो रैशनैलिटी है उसमें आपको ये चीज सोचनी है कि आप पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करें और ये बात अंडरस्टैंड करें कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके इर्द गिर्द वो मामूली नहीं है.
आप स्लाइटेस्ट आइडियाज को भी मतलब every information is very valuable. एवरी इंफॉर्मेशन इज वेरी वैल्यूएबल, और उसको प्रॉपरली यूज करना, उन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना, उन बायसेस को एलिमिनेट करना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं. Okay. ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन और क्यूरी फ्रॉम एनीवन प्लीज? जी सलमान साहब. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर मैं ये डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा एक एस्पेक्ट था जो क्लैरिटी उसमें रिक्वायर्ड है. जैसे वन फील, आई डोंट नो कि वो शायद हमारे जो एक रिलीजियस वो है कि वी हमारा कॉन्शियस या सब कॉन्शियस हमें एक फील देता है, मतलब डिसीजन से पहले यू फील लाइक कि आप गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, तो वो एक इनर एक वॉइस है जो आपको राइट एंड रॉन्ग की तरफ क्लैरिफाई करके गाइडेंस सी फील होती है फ्रॉम इनर साइड. अब वो सब ऑन टाइम हम उसको जो है उस पे उसको प्रेस करते हैं और वी गो फॉर द रॉन्ग, या हम उन्हें कहते यानी अपने उस कॉन्शियस को ये कहते हैं कि ये सब लोग ऐसे कर रहे हैं तो शायद मैं इस वजह से ये कर रहा हूँ. बट इनर से हमें वो जो ट्रू एंगल है उसकी एक आवाज आ रही होती है. तो ये भी तो सर डिसीजन मेकिंग का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है कि हमें तो इनर सेल्फ राइट और रॉन्ग के बारे में बता रहा है. अब वो हम गलती ये करते हैं कि हम सब वो जो राइट वाला एस्पेक्ट है, रॉन्ग को उसको ओवर इसलिए करते हैं कि वो वी फील लाइक कि बस बाकी लोग भी तो ऐसे कर रहे हैं. तो इधर सर ये डिसीजन मेकिंग में व्हाट इज दिस इशू, ये क्या और कहां तक इसका अमल दखल है इसमें सर? राइट जी सलमान साहब, बेसिकली लाइक आपने वो दुआए इस्तिखारा पढ़ी है या दुआए हाजात पढ़ी है, और आप अपने इनर फीलिंग्स को जो मजहबी कॉन्टेक्स्ट में कोट करना चाह रहे हो, और उसमें आप ये फील कर रहे हो कि आपके इनर सिग्नल्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि चीज़ सही ये है. हम अक्सर औकात ये भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि जो हमारा इनर सिग्नल हमें बता रहा है क्या वो भी सही है कि नहीं, उसको भी हम चैलेंजेबल कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं. नंबर 2, अभी हमने डिस्कस किया था कि आप पॉपुलर या एक्सेप्टेबल डिसीजन की तरफ चले जाते हो एज कंपेयर टू द ऑप्टिमम और द राइट डिसीजन. नंबर 3, इंट्यूशन और रैशनैलिटी, इन दोनों चीजों को लिटरेचर ये कहता है कि हमने साइड बाय साइड लेकर चलना है, और ये साइड बाय साइड होने से ही हमें बेहतर एविडेंस वो प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग. अक्सर औकात नो डाउट फैसले की बहुत सी नोयतें हो सकती हैं, बहुत से सिवेरिटीज हो सकती हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन उसके अंदर अगेन इंट्यूशन का रोल यकीनन है. आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है कि उसमें इनर फीलिंग्स को हम कहां तक सपोर्ट और प्रमोट कर सकते हैं, और उसमें ये जरूरी नहीं है कि हम उसमें कोई मजहबी हवाला ही देखें. हमारा मजहबी हवाला यकीनन है, लेकिन अगर हम उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी निकालें तो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो माइंड प्रोसेसेस हैं, दे आर ऑल देयर टू कम अप विद देयर ओन सॉर्ट्स ऑफ पैटर्न बिल्डिंग and explanations. To further the discussion, I would request Rifat to please turn on her microphone and say what she want to say. यस सर, ये जो बाइसेस डिस्कस हो रहे हैं या हमारी मिस्टेक्स डिस्कस हो रहे हैं जो हम डिसीजन मेकिंग के दौरान करते हैं, उसी सिलसिले में मेरे ज़हन में आ रहा था कि डिसीजन का असल कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि हम अपने पीछे से, जैसे कि इसका वर्डली मीनिंग भी है कि हम पीछे से, पास से कट के हम आगे की तरफ देखें कि हमने आगे क्या करना है. जबकि अक्सर हमारी हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स होती हैं, हमारा कोई होमवर्क नहीं होता, इवन हम ये नहीं प्रायोरिटीज डिसाइड कर पाते कि कौन से काम अर्जेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है, किनको पहले करना है, किनको नहीं करना, किसको ज्यादा प्लान करके करना है, किसको कम प्लान करके करना है, किसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसको हमने खुद करना है. तो ये चीजें भी हमारी प्रायोरिटीज जो हैं ये पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से पूरी नहीं हो पाती. और मजीद ये कि हम जो डिसीजन कर रहे होते हैं हमें ये नहीं पता होता कि हमारी अपनी डिसीजन पार वीक होती है, यानी नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब होता है कि हमारी अपनी डिसीजन मेकिंग की पार वीक हो सकता है. इस वजह से होगी हमारा इतना एक्सपीरियंस ना हो या हमने किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट ना किया हो, लेकिन हम फिर ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं, हम हालात पे ब्लेम देते हैं, हम अपनी जिंदगी में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जिम्मेदार ठहरा देते हैं. तो जबकि ये फैसला भी तो हमारा अपना ही होता है कि हम उनको यानी या तो हम पैसिव होकर चल रहे हो, तो ये भी तो हमारा अपना ही फैसला है. अगर हम दूसरों को अपने फैसले करने की इजाजत दे रहे हैं तो ये भी हमारा अपना फैसला है जो कि हम चेंज कर सकते हैं. तो इस तरह की यानी हमने अपना डिसीजन मेकिंग का जो पैटर्न है वो कभी रिवाइज करने का नहीं सोचा कि हम उसमें इस्लाह लेके आए, और उसी पर डिपेंड कर रहा है कि उसके नतीजे क्या निकलेंगे. होमवर्क करना चाहिए, अपना लिटरेचर कंसल्ट करना चाहिए. हमारे मजहब में तो हर तरह की एग्जाम्पल मौजूद है और कई सोर्सेज